be related to 5 best ways to improve your spoken English for free. Now, before I start talking about this issue, I'll just be telling you guys something about myself. And I'm not telling you just because I want to brag about it, but I'm just telling you because it's very important for you to understand that whatever I would be telling you would be related to the things which I've learned as a student and also as a teacher. I studied from International School of Sherifat, Lahore, and from 1992 to 2004, and at that time only Americans or people from Canada और people from England were teaching over there. एक international school है जहाँ पे वो सिर्फ, and one more thing, I would be speaking in Urdu so that people could actually understand whatever I am saying. So for 12 years, only for Urdu I used to have a Pakistani teacher. For all other subjects I used to have foreigners. Then I studied from Canada. I'm a graduate member of Canadian Institute of Marketing, and again over there I had that exposure where everything was in English. And then for the last 10 years I've been teaching English, and I've taught more than 25,000 students. Now, whatever these 3 things which I've told you right now are the things which would make you guys understand that whatever I'm saying or whatever I'm going to tell you guys is not going to be something which I'm just telling because I feel like telling it. It's because there's a specific reason behind it. When we are talking about the best ways to improve spoken English, I'll be talking about 5 best ways to improve your spoken English. But first of all, I'll just talk about some very basic things. Now, the question which you would be asking is that, is it important? क्या spoken English important होती है? मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. जब मैं कनाडा में पढ़ रहा था, तो या अगर आप बाहर रह रहे भी हैं, तो इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर मेन मैसेज. पाकिस्तान में हम लोग जब पाकिस्तान से वहाँ जाते हैं तो मेजॉरिटी लोग जो हैं वो जॉब्स कोई बहुत बड़ी नहीं कर रहे होते, और जॉब्स कर रहे होते हैं. कोई ऊबर चला रहा है, कोई ग्रोसरी स्टोर पे काम कर रहा है. Unless you have education from there, you won't be getting a very high paid salary. So what happens over there is that आपकी normal भी English हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. The second situation is that, is it important to know spoken English? और ये spoken English जो word है, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में exist करता है. असल में इसको कहते हैं English conversation. But most of the people would be talking about spoken English or would be calling it spoken English because it is pervasive. ये बहुत ज़्यादा मशहूर है. And the second thing is it important in Pakistan? पाकिस्तान में भी important नहीं है. For instance, अगर किसी ने आपको जॉब नहीं देनी तो आपको कहते हैं कि आपकी spoken English ठीक नहीं है, and you start believing that okay, my spoken English is not good, and that is the reason I'm not being given the job. But it's not the case. Sometimes you don't even know English and you'll be getting very good jobs. But there are specific people who really have to improve it. I'm just telling all these things for the reason that a lot of people would be saying कि English तो ज़रूरी नहीं है, हमने इसको क्यों education का criteria बना दिया. वो ज़रूरी नहीं है, मगर कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होती है. Like if you are getting your education in English, economics, biology, हर चीज़ आप English में पढ़ रहे हैं, तो आपकी English अगर नहीं है इतनी strong, तो आपकी उस subject की understanding भी affect हो जाती है. Who really has to improve the English? Perhaps in case you're teachers, in case you're working in a call center, in case you're working in a software company where you have to communicate with people from other countries. So all those, or many other professionals who really want to improve this conversation skills, would find this video to be quite helpful. The second thing I would be talking about is the role of the academy. अब जो academy का role होता है, it is not that important. I run 3 branches in Lahore. I also provide online classes. But again, I'll talk about a very basic thing, and that is, it's not about what you do in a month, it's what you have been doing for years. For instance, कोई 20,000, 25,000, 15,000 एक महीने का चार्ज कर ले और आपको कहे आप एक महीने में इंग्लिश सीख लेंगे,
पैकेज में 5,000 की होती है स्पोकन इंग्लिश की क्लास, बट बिलीव मी, 1 महीने में आप सीख कुछ नहीं सकते. यू जस्ट स्टार्ट योर जर्नी. इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स लर्निंग better English. The first step, which means minimum I would be talking about 6 months, but I don't ask people to come and enroll for 6 months, and even if they want to come for a month, it would be fine. But it's not only about what you would be learning in the academy, it's about what you would be doing in your everyday life, something which you would be doing जो आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में कर रहे होंगे, वो आपकी स्पोकन इंग्लिश या आपकी इंग्लिश को अफेक्ट करेगा. अकेडमी के 3 बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, या आई वुड से देयर आर 3 थिंग्स विच द अकेडमी कुड प्रोवाइड यू. द फर्स्ट वन इज़ गाइडेंस. एक टीचर जिसको इंग्लिश आती है वो आपको इंग्लिश के बारे में बता रहा होता है, आपको प्रैक्टिस करा रहा होता है. बट ओवर इवन इन दैट यू वुड बी स्पीकिंग, लाइक इफ़ देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, आप कितनी देर बोलेंगे? 2 मिनट, 3 मिनट? 2 या 3 मिनट से तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बेहतर भी नहीं होगी. So this is again something you need to realize. The second thing the academy can provide you is motivation. Sometimes you're not self-motivated. आप 2 दिन एक काम करते हैं, तीसरे दिन आप उसको छोड़ देते हैं, तो academy आपको वो motivation या वो teacher motivation provide कर सकता है. And the last and the most important thing is environment. And when you see other people working with you, when you see that out of like 24 hours you're taking out 2 hours in order to speak English and to learn English, you basically are very much prepared. Okay, I have to go to the academy, मैं academy जाऊँगा या जाऊँगी और वहाँ पे जाके I'll be learning. So this is what the academy is doing. There's not much which the academy would be doing beyond that. Now let's talk about what are the things you should never be doing. What are the things you should never be doing? If you're talking about the things you should never be doing, the first thing is you have to get rid of whatever is being done in the conventional way. Conventional मैं उर्दू में बता देता हूँ simple words में, एक देसी स्टाइल में जो आप कर रहे हैं कि वेजिटेबल्स के नाम याद कर रहे हैं, फ्रूट्स के नाम याद कर रहे हैं, ये चीज़ें आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में आपके किसी they would not be practical, उनका कोई यूजेज ही नहीं होगा. So stop doing that. Now let's talk about the first thing you need to do, and that is you have to start watching seasons and subtitles. And what is the meaning of that? Seasons with subtitles. YouTube पे ना देखें. I would be providing you a list of those subtitles in case you want to have a plan for everything which I'm going to say right now. Just share your email address so that I could send it to you. Download करें, Netflix पे देखें, Amazon पे देखें, but you need to be watching seasons with subtitles for 3 to 4 hours in case you want to start learning English. And that is something you need to do for how much time? That is something you have to do for at least a month before you start working on anything else. Then the question is, how is it beneficial? How is it practical? How is it going to help you with all those things which we are doing? Well, the first thing is when you would be watching those seasons, first of all your pronunciation would improve. The second thing is your vocabulary would improve, your grammar would improve. You would be also getting a know-how about the way they are saying those words, the grammar and everything. So 3 to 4 hours. And why am I saying 3 to 4 hours? वो जो 100 hours होंगे ना आपके, those 100 hours where you would be supplying your brain with the information is going to be the first step towards learning English. वो जो 100 hours कि जो आप सुन रहे हैं या आप subtitles के साथ भी देख रहे हैं, वो आपका first step है. 100 hours के बाद अगर आप इंग्लिश बोलेंगे भी नहीं ना, कोशिश भी करेंगे ना बोलें, तो information दिमाग जो है ना वो you're feeding something to the brain and it is going to come out in one way or the other. एक चीज़ आप फीड कर रहे हैं, कब राइटिंग में आएगी, लिसनिंग स्पीकिंग में आएगी, वो निकलेगी किसी ना किसी तरीके से. सो दोज 100 hours are very important in case you want to work on your spoken English. So the first thing I told you guys was stop learning names of vegetables, fruits and everything. You need to understand that you need to supply yourself with 100 hours of listening, because listening is very much directly related to the speaking.
The second thing which you would be doing right after you have watched those videos for a month is start reading at the same time. You could also do it at the same time, which means you would be reading. It could be a newspaper, it could be a novel, it could be some articles, but you need to start understanding that there is something called reading. रीडिंग क्या होती है? रीडिंग से आपकी दो चीज़ें होती हैं. एक, आपका ज़बान को आदत पड़ती है कि वो इंग्लिश को बोले, और दूसरा आपके जो जॉज हैं जो थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं, दर्द होने लग जाता है, उनको एक प्रैक्टिस मिलती है कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें. नाउ आई एम गोइंग टू रीड सम एनी रीडिंग पैसेज फ्रॉम a book, and there are two things. There are some people who are having problems with their accent. Accent के मतलब क्या है? किसी का पंजाबी, सराइकी, सिंधी, कोई और एक्सेंट जो है उनके इंग्लिश को अफेक्ट कर रहा होता है. अब वो एक्सेंट को चेंज, उसको आपकी इंग्लिश से उसको रिमूव करने के लिए यू हैव टू डू विस्परिंग. व्हाट इज विस्परिंग? आई जस्ट शो यू. According to Wilson, when we are able to apply the same parameters and mathematical principles to weighing both truths of races. What is this? This is called whispering. While recognizing that many of his colleagues question such an outcome, Wilson, one of sociobiology's leading proponents, finds himself simultaneously more and more struck by the functional similarities that characterize both insect and. So what are we doing? आपने 15 मिनट के लिए विस्पर करना है, जिससे आपकी एक्सेंट जो है वो बेहतर होगा, और दूसरा आपने रीडिंग करनी है. 15 मिनट्स ऑफ विस्परिंग, 25 to 30 minutes of reading every day, and that is something which needs to be done simultaneously with watching. So till now, with your entire preparation, what are the two things you're doing? You're listening a lot and you're reading, but you are not even speaking. Speaking तो अभी तक हम कर ही नहीं है, because these are the foundation which would enable you to start speaking. The third thing would be working on grammar and vocabulary. And when people come to me, the first question they ask is that ये grammar की कोई book बता दें. हमने spoken English 350 words, 350 pages की एक book या 400 pages की एक book, कैसे आप उसको याद करेंगे और कैसे आप उसको cover करेंगे? जब आप spoken English के लिए या conversation के लिए करते हैं, you have to work on your correct sentence correction rather than memorizing those words कि ये किस किस्म का सेंटेंस है या what are those things. You need to correct those sentences. So whenever, and I would also be sending you that booklet in which you would be able to correct those sentences. Work on sentence correction rather than working on books which would just be telling you कि nouns क्या होते हैं, verbs क्या होते हैं. That is related to basic English. That is not related to English conversation skills. Then comes the vocabulary. For vocabulary, I work on something called similar words. एक word होता है इंग्लिश का. मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि एक वर्ड है इंग्लिश का, आप कहते हैं डिनाई. तो आपको डिनाई का सिमिलर वर्ड नहीं आता होगा, सोचते रहेंगे डिनाई का क्या सिमिलर वर्ड है, एंड देन यू कम अप विद अ वर्ड विच इज़ कॉल्ड गेन से. अब गेन से एक ज़रा मुश्किल वर्ड है, तो मैं आपको एक और भी एग्जांपल दे देता हूँ. फॉर इंस्टेंस, what would be the result of everything which just happened? अब रिजल्ट है, आपको एक ही वर्ड अगर आता है जिसको कहते हैं रिजल्ट, आपको एक ही वर्ड आता है रिजल्ट, तो आप बोलते हुए रुक जाते हैं. आप कहते हैं मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है. बट यू हैव टू वर्क ऑन योर सिमिलर वर्ड्स. आप, मुझे लगता है आपको पता होगा कि रिजल्ट का सिमिलर वर्ड क्या होगा, आउटकम. उसका एक और वर्ड क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस. तो वो सिमिलर वर्ड एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं कि I would be sending those to you in case you share your email address. आपको 20 पेजेस मिलेंगे, हर पेज पे 90 वर्ड्स होंगे. आपको उन वर्ड्स के उर्दू में मीनिंग आते होंगे, अगर इंग्लिश में आपको आते होंगे, बट इट विल टेक यू टाइम. कुछ लोगों को 10 सेकेंड्स लगेंगे, कुछ को 15 सेकेंड्स लगेंगे, कुछ को 25 सेकेंड्स लगेंगे एक वर्ड का सिमिलर वर्ड सोचने में. मगर ये जो चीज़ है, दैट इज़ गोइंग टू इनेबल यू टू पैराफ्रेज होता है एक ही चीज़ को डिफरेंट वेज में बताना, एंड इट वुड ऑल्सो मेक यू मच मोर रिस्पॉन्सिव एज फार एज योर कॉन्वर्सेशन इज कंसर्न, राइट. तो नए वर्ड्स याद करने से बेहतर है कि आपको एक वर्ड आता है जैसे रिजल्ट. व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एंटायर प्रिपरेशन, व्हाट वाज द आउटकम, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस.
So you are working on the words you already know, but you have to work on them so much कि आपको सोचना ना पड़े एक ही वर्ड को या एक ही सेंटेंस को बोलने के, आपके पास 2 से 3 तरीके हों, वरना आप रुक जाएंगे बोलते वक्त. You will stop. Then the fourth thing is finding a speaking partner. Speaking partner आपके क्लास में कोई हो सकता है, कोई आपका कज़न, कोई आपका फ्रेंड, जो आपके साथ बोले, कम से कम आधा घंटा बोले, ये सब कुछ करने के बाद for half an hour. And the last thing, and with that person you would also be having topics, you would also be working on other things, which means situational English. आप कहीं जाएंगे, you'll be talking about the area, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं उसके बारे में सोचेंगे, इधर जो when I'm in the restaurant, what kind of, like, how can I describe the restaurant? You could talk about that the food was appetizing, you could say that I love the ambience, you could talk about the waiters or the servers were very cordial, they were very friendly. All these things are what you're talking about the situation. And when you go with your speaking partner, when you talk about things with your speaking partner, you actually work on your English, which is much more practical. And the last thing, which is the most important thing, is that all these things need to be there in your life forever. ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ या आपको सीजन्स का कह रहा हूँ, आपकी इंग्लिश 1 महीने के लिए आप करेंगे, दूसरे महीने में फिर नीचे चली जाएगी. तो ये जो भी मैं चीज़ें करा रहा हूँ ना, उसका what is the crux, what is the bottom line? The basic thing is when you're working on these all, what are you doing? अगर आप सीजन्स देख रहे हैं, if you're watching seasons, what would happen? आप रोज़ सीज़न देखेंगे, 40 मिनट्स के लिए, 45 मिनट्स के लिए एक एपिसोड देखेंगे. उसके बाद जब मैं आपको कह रहा हूँ कि रीडिंग करें आर्टिकल्स की, तो आपको आदत पड़ जाएगी, 15 मिनट आप रोज़ आर्टिकल्स पढ़ा करेंगे. स्पीकिंग पार्टनर का ये है कि आप किसी ना किसी को साथ ढूंढ लेंगे जिसके साथ आप ये सब चीज़ें कर रहे होंगे. इवन इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश एट ऑल, वो जो सीजन्स हैं जो आप इंग्लिश देख रहे होंगे, और दूसरा जो आप रीड कर रहे होंगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी हमेशा इंग्लिश, चाहे आप बोल रहे भी नहीं है ना, इस लेवल पे होगी कि जब भी कोई आपको कहेगा बोलें, आप बोल सकेंगे. ओके, थैंक यू.